Okay, good morning everyone. Welcome back to Crack Grade B. मेरा नाम है ऋषभ and let's begin today's class for economy and finance issues and analysis. Okay, I am audible. I know it. Good. Okay. Good morning Isha. Good morning Nivedita. Good morning Gaurav. Good morning Niput. सबको बधाई. 6 महीने से जिसके लिए पढ़ाई कर रहे हो उसका नोटिफिकेशन फाइनली आउट हो गया है. Okay, so let's begin the class. So the remittances fall 23% to $2.1 billion in February. बस यही है न्यूज. सबसे इम्पोर्टेंट यही है. दूसरी चीज में याद रखने वाली क्या होती है? 50% कॉन्ट्रीब्यूशन इज बाई इंटरनेशनल ट्रैवल. ठीक है. बस दो ही चीज याद रखनी होती है इसमें. तीसरी चीज क्या याद रखनी होती है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ LRS? तो ये है $2,50,000. ठीक है. जस्ट थ्री थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर फॉर रेमिटेंसेस. पहला जो नंबर है मंथली, दूसरा हाईएस्ट किसका है इंटरनेशनल ट्रैवल, एंड थर्ड इज LRS स्कीम में अलाउड कितना है $2,50,000. जस्ट थ्री थिंग्स. गुड मॉर्निंग श्रेया. So let's see. So in February, Indians remitted $2.1 billion under RBI's liberalized remittances scheme. Okay, further in April, so from April to February, all-time high of $24 billion. ठीक है. अप्रैल से फरवरी के बीच में मतलब 11 महीने में $24 billion Indians have remitted from India to abroad, mostly for international travel. ठीक है. It's an all-time high. तो previous आई था $19 billion फाइनेंशियल ईयर 22. Okay. So international travel constituted more than 50% of entire outward remittances. और कितना था वो? $1.07 billion. $1.07 billion. तो सिंपल है. रिबिलाइज रेमिटेंसेस स्कीम पता होनी चाहिए $250,000 वाली बाई RBI. सेकंड हाईएस्ट वेटेज किसका है, एंड थर्ड मंथली डेटा क्या था. और वो भी जब RBI का एग्जाम आएगा उसके पास वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. ओके, नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट. मनीष, स्ट्रैटेजी वीडियो अशोक सर विल अपलोड इन अ डे और टू. अभी तो बहुत दिन है. हो जाएगा, स्ट्रैटेजी बन जाएगी. गुड मॉर्निंग मनीष. आ जाएगी स्ट्रैटेजी वीडियो. स्ट्रैटेजी सिंपल. रीड. रीड एज मच एज यू कैन एंड एज मेनी टाइम्स एज यू कैन फ्रॉम द कोर्स, नॉट फ्रॉम एवरीवेयर. So SEBI issues fresh procedure for vault managers. Change in vault manager. So in case vault manager change हो रहा है किसी कंपनी के, then there should be a fresh procedure for prior approval. ठीक है. के लिए एक प्रायर अप्रूवल का नया प्रोसीजर लाया है सेबी. वाई? इफ वॉल्ट मैनेजर्स आर चेंजिंग. वॉल्ट मैनेजर्स क्या होते हैं? दोज हु मैनेज गोल्ड. ठीक है. क्वालिटी ऑफ गोल्ड मैनेज करते हैं, देयर स्टोरेज ऑफ गोल्ड मैनेज करते हैं. दोज आर वॉल्ट मैनेजर्स. ठीक है. तो इन केस चेंज होता है वो वॉल्ट मैनेजर फॉर द कंपनी, देन यू हैव टू टेल. ठीक है. यू हैव टू गेट अ न्यू, there is a new procedure and you should get new approval from SEBI. Let's see what it is. SEBI has issued procedure for obtaining prior approval in case of change in control of vault manager. ठीक है. कंट्रोल का चेंज मीन्स मैनेजमेंट चेंज हो रही है vault managers. Under the new procedure, an application made by the vault managers for prior approval will have to be accompanied by a declaration about the acquirer's shareholding pattern, past application about these vault managers. ठीक है. vault manager अगर चेंज हो रहा है तो अपनी पूरी इतिहास बताना होगा फॉर लास्ट 5 years at least बिफोर प्रायर अप्रूवल. ठीक है. पहली चीज तो ये है. दूसरी चीज जो उसमें नहीं मेंशन है, सेकेंड थिंग इज फॉर इफ देर इज अ चेंज इन वॉल्ट मैनेजर मिड स्कीम. ठीक है. अगर कोई चेंज होता है देन यू शुड नोटिफाई सेबी विद इन 6 months ऑफ प्रायर अप्रूवल.
ठीक है, ये सेबी को बताना होगा। ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज, गुड मॉर्निंग मोनिका, इफ देयर इज अ चेंज, ठीक है, इन्वॉल्व मैनेजर, देन यू विल हैव टू नोटिफाई सेबी विद इन 6 months ऑफ प्रायर नाउ। ठीक है, नाउ सेबी विल गिव यू इन प्रिंसिपल अप्रूवल। ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल सेबी से मिल जाएगा। ठीक, अब जब ये अप्रूवल मिल गया, देन यू विल हैव 3 months to get approved by to make application to NCLT अप्लाई। ठीक है, 3 महीने के अंदर NCLT में अप्लाई, एंड NCLT विद इन 15 days will give you approval। ठीक है, NCLT will give you approval। अब जब ये अप्रूवल मिल जाएगा, देन फाइनल अप्रूवल बाय सेबी, फाइनल अप्रूवल बाय सेबी। ठीक है, तो ये है प्रोसीजर इन केस देयर इज अ चेंज इन मैनेजमेंट ऑफ वॉल्ट मैनेजर्स। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर आपको सेबी को अप्लाई करना है। विद इन 3 आफ्टर सेबी गिव्स यू एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल, अप्लाई टू एनसीएलटी विद इन 3 months, एंड जब एनसीएलटी आपको अप्रूवल दे देगा विद इन 15 days, देन फाइनल अप्रूवल विल बी गिवन बाय सेबी एंड यू कैन बी द न्यू वॉल्ट मैनेजर। तो ये होगा चेंज का प्रोसीजर, न्यू प्रोसीजर। ठीक है, ओके। Now SEBI to allow result based fees for new mutual fund category. So this is proposed. ये proposed है, अभी हुआ नहीं है, proposed है। So this is proposed change, not actual change but proposed change. But we will see कि है क्या। So basically currently for mutual fund there is a initial fees जो कि लगती है for, because management is, some fund manager is managing it, so he will charge you a fee। तो upfront fees लगती है, which is very minimal fees but लगती तो है ही। ठीक है, expense ratio मान लो उसको। now SEBI has said that mutual funds those who perform better than the market, जैसे मान लो निफ्टी has grown by 7% this year suppose, and active mutual fund कोई स्कीम है वो ग्रो करती है 13% से, सो इट इज प्रोवाइडिंग मोर रिटर्न। सो अगर ज्यादा रिटर्न दे रही है, ज्यादा मतलब दे आर मैनेजिंग देयर फंड पोर्टफोलियो वेल, देन दे शुड बी इंसेंटिवाइज इन सम हाउ। तो इस इंसेंटिवाइजेशन को कैसे करें, हाउ टू डू इट, सेबी हैज प्रपोज दैट इफ a fund actively managed mutual fund is outperforming index like Nifty or Sensex, ठीक है, then they can charge a परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस। अगर परफॉर्मेंस बेहतर है तो उससे लिंक करके कुछ फीस चार्ज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, म्यूचुअल फंड विल बी इंसेंटिवाइज टू प्रोवाइड बेटर रिटर्न्स। व्हाई, अगर अच्छा रिटर्न देंगे तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा नियम। तो दिस इज अ प्रपोज चेंज, लेट्स सी। So market regulator, the SEBI is planning to permit a new category of mutual fund where asset managers charges will partly be linked to performance। ठीक है, asset management charges will be partly linked to performance। Okay, as a proposal SEBI wants to allow additional charges if fund consistently outperforms index। ठीक है, ये रिटर्न अगर दे रहा, मान लो इंडेक्स दे रहा है, लेट्स से इंडेक्स इज गिविंग यू 10%, एक्टिव म्यूचुअल फंड इज गिविंग यू 15% रिटर्न, तो ये 5% का जो एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, दिस इज अ परफॉर्मेंस लिंक। तो इस 5% के ऊपर फंड मैनेजर्स कैन गेट सम इंसेंटिव, इट इज अ प्रपोज चेंज। ठीक है, इंडिया पहली ऐसी कंट्री नहीं होगी जो ये कर रही है, बट यस इट विल बी इन टॉप 5 टॉप 6 कंट्रीज डूइंग दिस। So the proposal to introduce performance link charges on select mutual fund scheme has not been previously reported। ठीक है, according to the plan, the base fees currently is charged on mutual fund would be reduced। ठीक है, तो base fees हो जाएगी कम, so that performance linked incentive or additional charge can be charged on the customer। से दो फायदा है, पहला कि the fund managers will do better
in managing their fund so that they can get better returns. अगर return अच्छा मिलेगा लोगों को, so no matter how much you charge later performance linked, so they will be happy to give it. ठीक है, तो दो चीजें होंगी, इंसेंटिव मिलता रहेगा मैनेजर्स को टू परफॉर्म बेटर, एंड ऑल्सो upfront cost will be lower to get a mutual fund. Now, if introduced, India would be one of a handful of major markets to introduce performance-linked fees. Performance-linked fees. Okay. An option for additional charges could act as an incentive for funds to give better returns. ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना पड़ेगा फंड्स को to perform better. Okay. तो दो चेंजेस देख लिए सेबी में, पहले वॉल्ट मैनेजर वाले, और ये तो प्रपोज्ड है. इफ इट विल हैपन वी विल सी. नाउ एक्सपोर्ट की तीसरी न्यूज. नाउ नो नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर द रीजन. ठीक है, सारा परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली इंडिया एक्सपोर्ट्स इंजीनियरिंग गुड्स. ठीक है, हमारा की एक्सपोर्ट में ये भी है इंजीनियरिंग गुड. पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी भेज रहे हैं, एंड बट इंजीनियरिंग गुड्स एग्रीकल्चर गुड्स है, टेक्सटाइल है, बट इंजीनियरिंग गुड्स इज ऑल्सो वन ऑफ देम. कहाँ हम लोग भेजते हैं इंजीनियरिंग गुड्स? इन डेवलप्ड मार्केट्स. In developed markets. What is currently happening in developed markets of Europe? They are reeling under inflation, high inflation, low growth. ठीक है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, प्राइस राइज है, ग्रोथ कम है, डिमांड कम हो जाएगी. ऑब्वियसली डिमांड विल गो डाउन. व्हाई? बिकॉज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स आर इंक्रीजिंग एवरीवेयर. अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम होगी कहीं की भी. इन्वेस्टमेंट्स विल बी लोअर. अब इन्वेस्टमेंट कम है तो demand of investment goods, capital goods is also lower. Engineering goods are basically capital goods. The demand is also lower. ठीक है, अब ये हो क्यों रहा है? पहली तो वही है, वॉर. हर चीज का रीजन इज वॉर, एंड देयर इज अ डिप्रेस्ड ग्लोबल डिमांड. देयर इज अ रशिया यूक्रेन वॉर. इन्फ्लेशन है, डिमांड कम है. दैट्स व्हाई आवर एक्सपोर्ट्स आर डिक्लाइनिंग फॉर इंजीनियरिंग गुड्स. Okay, the contraction in shipments of engineering goods to key markets like UAE, Turkey, Italy, China led to an overall decrement in engineering exports by 4.6%. ठीक है, what are the reasons? Direct result of depressed global demand due to inflation and tighter monetary policy. Tighter monetary policy means lower investment. Higher credit rates, lower investments. As a consequence, the share of engineering goods in India's merchandise export declined to 23.92% against 26. Means टोटल गुड्स एक्सपोर्ट जो इंडिया करता है उसमें 24% शेयर इज ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, एंड इट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 26.5%. ओके, सो हर जगह कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है. दिस विल शो यू दैट कॉन्ट्रैक्शन हैज नॉट हैपेंड इन एवरी कंट्री. जैसे यूएस में देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स. व्हाई? बिकॉज ऑफ IRA. ठीक है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो आया है वहां पे यूएस में. In US, there is a Inflation Reduction Act. So, US is heavily investing in industrial manufacturing sector. पूरी दुनिया से लड़ाई करता रहता है, बट इस समय चुपचाप सब्सिडी दे रहा है यूएस अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए. तो या यूएस वांट्स मोर इंजीनियरिंग गुड्स, मोर कैपिटल गुड्स. So that's why the growth is higher regarding export growth of engineering goods to US. बाकी जगह अगर देखा जाएगा मेजर इकोनॉमीज लाइक UAE, इटली, इट इज डिक्लाइनिंग. Okay. Now, some more reasons for that. By Engineering Export Promotion Council. So, number one is geopolitical crisis. Geopolitical crisis in the CIS region. CIS means Commonwealth of Independent States. The 15 states of Russia. ठीक है, जो बेसिकली यूएसएसआर के स्टेट से 91 में अलग हो गए, उनको कहा जाता है CIS region. ठीक है, led by Russia Ukraine war. Economic slowdown in Northeast Asia, especially in China, because Chinese economy was closed, zero COVID policy की वजह से. ठीक है, also crisis in Southeast Asia means both developing and developed countries are seeing lower demands. Both developing and developed countries are seeing lower demand. That's why अब हमारे गुड्स की डिमांड कम है, हमारे एक्सपोर्ट्स कम है. ठीक है. So engineering goods contracted to $107 billion. Overall exports grew 6% year on year at $447 billion. We have seen it. Overall merchandise export, total merchandise plus सर्विस को लेके कितना है?
$770 बिलियन। ठीक है, और ग्रोथ कहाँ है? यूएस में सबसे ज्यादा, देन जर्मनी एंड सिंगापुर। ठीक है, बाई वैल्यू सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं? यूएस में कर रहे हैं। ओके, so this is it. Now RBI bulletin, the RBI bulletin number 1. State of the economy in April. तो ये वाली जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी है अप्रैल वाली, तो बेसिकली ये फोकस करता है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एंड हाउ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस आर लेट्स से फोकसिंग ऑन इंडिया एंड हाउ दे आर रेटिंग अस, क्योंकि आईएमएफ ने क्या किया है, दे हैव रिड्यूस्ड आवर जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 24. So that's what they are talking. This state of economy will talk about, and how we will be still be the fastest growing major economy at 5.9% as per IMF also. ठीक है, 5.9% पे भी हम सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेंगे. We are, I don't know how we are happy about it. Okay, now let's see. Multilateral institution downgraded their earlier forecast citing slower consumption growth. ठीक है, इंडिया की जीडीपी में सबसे हाईएस्ट वेटेज मोर देन 60%, will be or is of C, consumer demand. तो कंज्यूमर ग्रोथ कम हुई है एंड चैलेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशंस इज डूइंग व्हाट? लोअर एक्सपोर्ट. तो C plus I plus G plus NX में C and X are reeling. ठीक है, net exports and also consumer demand is going down. Only in one place it is growth, that is for investment infrastructure. Sorry, infrastructure investment, I part. इन्वेस्टमेंट में हमें ग्रोथ दिखाई दी है बस. ठीक है, बिसाइड्स अपवर्ड रिविजन्स ऑफ जीडीपी डेटा ऑफ पास्ट ईयर. अपवर्ड रिवीजन क्यों? अभी जो एनएसओ का एडवांस एस्टिमेट आया, वी हैव सीन 8.7% से बढ़ा के 9.1 कर दिया गया लास्ट ईयर का. तो हमारा क्या हुआ? बेस हाई कर दिया गया. बेस विल, इफ द बेस विल बी हायर, द परसेंटेज ग्रोथ विल बी लोअर. ठीक है, गुड मॉर्निंग कृष्णा. Okay, also IMF has cut India's GDP for FY24 to 5.9% from 6.1. अब अगली 3 महीने बाद फिर आएगा, कुछ ना कुछ बढ़ा घटा देंगे, because inflation is under control. Until now inflation is under control. If inflation will be under control, the growth will be higher. तो उसको growth ज़्यादा हो जाएगी. So keep on reading it. Don't pay much attention की ऐसा. एग्जाम के पास जो डेटा आएगा वो वाला याद रख लेना. तो अभी करेंटली 5.9% चल रहा है. दुग्गल साहब अभी 5.9% पे IMF का जीडीपी प्रोजेक्शन. Okay, although too early to tell, most recent data arrivals suggest that multilateral institution, IMF in particular, might encounter forecast error. That's what RBI has said. There can be a forecast error by IMF. ठीक है, because actual outcomes will surprise them positively. Why? Because RBI will manage the inflation. If inflation will be managed and interest rates will not go high, our investment demand will go high. ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, देन द जीडीपी विल राइज. बट IMF, वर्ल्ड बैंक, ये कोई फुल एंड फाइनल रिपोर्ट तो है नहीं. इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी 3 months 4 months. ओके, तो उसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती. Okay, the report also noted that downcosting of growth for India was in line with the lowering of global growth projection as well. Since global growth की projection भी कम की गई है, इंडिया की ग्रोथ भी साथ साथ कम कर दी गई. Yes, it is. India is expected to be among the fastest growing major economies of the world, accounting for 15% of the global growth. IMF ने बोला है, we have seen it, 50% रहेगा इंडिया प्लस चाइना, 15% इंडिया का, 35% चाइना का. Okay, so RBI in its April review, monetary policy review, has revised financial year 24 GDP forecast to 6.5%. अभी ये याद रखना, 0.1% बढ़ा है, 6.4 से बढ़ के 6.5% कर दिया RBI ने अपना खुद का प्रोजेक्शन. Remember this, okay? अगली monetary policy meeting तक, which will be happening in June maybe. Okay, the monetary policy committee kept the interest rate unchanged in the recent meeting.
after raising the rates by 250 basis points between May and February. ठीक है, मई और फरवरी के बीच में 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था, अब रोक दिया है, पॉज है ये, स्टॉप नहीं है. इफ इन्फ्लेशन विल गो डाउन then again there will be a pause in next monetary policy, but let's see. Now aggregate demand conditions in India remained resilient, not growing. Resilient means whatever there was demand, initial demand, वो demand अब भी है. It is not growing, but it is not falling also. ठीक है, with urban consumption demand rising robustly. Okay, but it has been stagnated. That's why C का जो rate है from 63% in the GDP, it is going to fall down to around 60%. ठीक है, rural demand conditions are improving steadily, brightened by the expectation of bumper rabi harvest. Okay, because हमारा consumption demand बढ़ा था, but we have seen that rural demand still didn't grow. Rural demand still didn't grow. Even with the pent up demand of urban consumption, rural demand नहीं बढ़ रही थी. Why? Because rural wages were not growing. ठीक है, rural wages were not growing. The real increase in rural wage was around 1% only. 1% था rural wage का increase. 1%. तो कहाँ से डिमांड बढ़ेगी? ठीक, पैसे ही नहीं रहते थे लोगों के पास. Let's see what happens now. Okay, now damage to standing crops due to unseasonal rains and hailstorm appear to be contained. Okay, the report also highlighted the downside risk of El Nino condition. El Nino condition किस पे होगा? खारिफ क्रॉप पे, गर्मी वाले क्रॉप पे. क्यों? अगर मानसून नहीं आएगा, हमारा एग्रीकल्चर इज मोस्टली रेन फेड, इरिगेशन फैसिलिटीज हमारी ज्यादा नहीं है, मोस्टली इन यूपी बिहार एटसेट्रा, इट इज मोस्टली ड्यू टू रेन्स. ठीक है, so but said the Indian Ocean dipole, which is the difference in sea temperature between western pole of Arabian Sea and eastern pole of Indonesia, is currently neutral. ठीक है, and forecast to turn positive. So RBI is saying that El Nino condition risk is there, but it is a 50% chance. Why? अब इंडियन ओशन डाइपोल में नहीं जाते हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो वेस्टर्न अरेबियन सी, इफ एनीवन रिमेंबर्स द मैप, वेस्टर्न अरेबियन सी एंड ईस्ट एंड इंडोनेशिया. इंडोनेशिया क्या है? जहां पे हमारा इंडिया का वेस्ट और इंडिया का ईस्ट समझ, इन द ओशियन पार्ट, इंडिया का वेस्ट और इंडिया का ईस्ट. So that dipole is neutral. Neutral dipole means a normal or average rainfall. Neutral dipole. But अगर El Nino condition prevail कर जाती है Pacific में, then there is a risk of droughts in India. But it's a 50-50 condition. Okay. Now the influence of rainfall variability in the region is likely to be beneficial for southwest monsoon precipitation. Also, the total flow of resources to commercial sector, including banking credit, has increased by 37%. Don't remember all this. Okay. Taking all those into consideration, the risks are evenly balanced and real GDP growth will be 6.5% as projected by Monetary Policy Committee of February. ठीक है, even if El Nino impacts value added in agriculture, GVA, जो कि हमने देखा है 3.7 था from the last quarter. ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया वुड बी वेल अबव 5.9% एज प्रोजेक्टेड बाय IMF. ठीक है, अगर एल नीनो आता भी है, एल नीनो कंडीशन प्रिवेल करती भी है, हमारा खरीफ क्रॉप अगर इफेक्ट होता भी है, उसके बाद भी इवन आफ्टर दैट आवर ग्रोथ इफ नॉट 6.5%, इट विल बी अबव 5.9% एज फोरकास्टेड बाय IMF. ठीक है, जस्ट रीड इट वंस सो दैट यू नो द हाउ जियो इकोनॉमिक इज वर्किंग. बस सब रटने की जरूरत नहीं है, इसमें चेंज हो जाएगा अगले महीने फिर. ओके, नाउ रीसेंट regime reversal in inflation. So basically this article examines the regime shifts in inflation in India. ठीक है, so since second half of 2020 to 23 means second half of financial year 23, वो क्या दिखा रहा है? That we are moving towards a low inflation regime. ठीक है, because there was a decline in inflation persistence. Also reduction in broad base and a fall in contribution of imported inflation. Fall in imported inflation क्यों हुआ? Because सबसे ज्यादा हम लोग import करते हैं crude, और crude oil हम सस्ते में import कर पा रहे हैं, तो that's why imported inflation fell down.
Now, contribution of cyclically sensitive inflation from categories such as household goods, services, education and housing is picking up in the recent period. अब ये इन्फ्लेशन फ्रॉम दीज थिंग्स, अब इसको साइक्लिकल क्यों कहा गया है? व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिकल? ठीक है, अब इसको साइक्लिकल क्यों कहा गया है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, एजुकेशन में देयर इज अ सीजन व्हेन एडमिशंस आर हैपनिंग, ठीक है, इस टाइम एडमिशंस हो रहे होते हैं, तो सबसे ज्यादा फ्लो ऑफ मनी इज ड्यूरिंग दिस सीजन ऑफ मार्च टू जून। मार्च से जून तक एक साइकिल होती है, सीजनल साइकिल, जब एजुकेशन में पैसा घूम रहा होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ऑल्सो फॉर सर्विसेज, हाउसिंग, हाउसिंग डिमांड इज राइजिंग, ठीक है, तो दैट्स वाई वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग। Hence, monetary policy has to be ready to act preemptive to ensure that inflation weathers demand pull and is guided to target. Means, since these categories like household goods, services, education and housing, ठीक है, ये पिक करती है डिमांड। अब देखो हाउसहोल्ड गुड्स, आई शुड नॉट से दिस बट दिस इज द ट्रूथ। इसको सीजनल क्यों कहा जाता है हाउसहोल्ड गुड्स को? बिकॉज व्हेन द वेडिंग सीजन अराइव्स, ठीक है, I should not say this, but यही है truth. So let's. So when the wedding season arrives, the demand for household goods, I don't know why, I don't know for what reason, it increases in the Indian economy. ठीक है, गुड्स की, हाउस होल्ड गुड्स की डिमांड अचानक से बढ़ती है जब शादियों का सीजन आता है, एक सीजन आता है शादी का, तो बढ़ती है। सो जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, हायर डिमांड कॉजिंग हायर प्राइस राइज। सो दिस रिपोर्ट इज सेइंग, तो इस सीजनल कंडीशन से निपटने के लिए व्हाट RBI should do, RBI should be act preemptively, पहले से एक्ट करना पड़ेगा RBI को, so that inflation effect due to this demand pull is lowered down, ठीक है, अब डिमांड पुल की वजह से बढ़े ना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एजुकेशन, हाउसिंग, हाउस होल्ड गुड्स, जो जिसकी सीजनल डिमांड होती है ड्यूरिंग सम सीजन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, वो कम हो जाए। सर्विसेज ऑल्सो, ओके, सो RBI should act preemptively. Okay, so this is the second one. Third one is capital outlay of Indian state. So इसका basic purpose ये है इस वाले report का. You don't have to remember everything, but you should know कि होता क्या है. So this article investigate relationship between states capital outlay, मतलब capital expenditure and GSDP. ठीक है, तो relationship between states capital expenditure and GSDP, क्या relation है दोनों में? ठीक है, need for balancing the requirement of higher capital outlay. एक बार याद हो हमने पढ़ा था, RBI ने कहा था इन द बूम साइकिल और द ग्रोथ साइकिल देयर शुड बी अ फंड, ठीक है, वेयर द स्टेट शुड कीप सरप्लस मनी जस्ट इन केस इफ देयर इज अ रिसेशनरी साइकिल, ठीक है, रिवर्स हो गया अगर साइकिल, आपका ग्रोथ का साइकिल रिवर्स हो गया, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में चला गया, देन द फंड दैट यू हैव कलेक्टेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर यू कैन यूज इट ड्यूरिंग योर रिसेशनरी पीरियड विदाउट पुटिंग मच प्रेशर ऑन योर एक्सचेकर्स, ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्रोथ पीरियड में कुछ फंड्स अलग करके रख लेंगे देन यू कैन यूज इट, ठीक है। और लेट्स सी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन स्टेट्स कैपिटल आउटले एंड GSDP, ठीक है। हायर लेवल्स ऑफ डेट हिंडर स्टेट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन कैपिटल आउटले, स्पेशली व्हेन द लेवल ऑफ डेट आर इन हायर क्वांटाइल्स। अब व्हाई इट इज सेइंग दिस? सो सिंपल सा मतलब ये है कि अगर स्टेट के ऊपर डेट बर्डन ज्यादा होगा देन स्टेट्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी लोअर डाउन। व्हाई? क्योंकि स्टेट की जो मनी होती है, जो बजट आता है, उसमें कुछ प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, उसको आप नहीं हटा सकते, लाइक गिविंग पेंशन, सैलरीज, ठीक है, इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन सम पार्ट एटसेट्रा। तो जब पैसे बचेंगे नहीं, डेट ज्यादा रहेगी, पैसे रहेंगे नहीं, then you can't invest in capital expenditure. Point number one. Point number two is states exhibit a counter cyclical behavior in their allocation of capital outlay. अब ये counter cyclical behavior क्या होता है? Means जो साइकिल चल रही है, if it's a boom cycle और let's say a growth cycle, तो ग्रोथ साइकिल में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए ग्रोथ साइकिल में, सो स्टेट्स डू व्हाट? दे इन्वेस्ट लेस इन कैपिटल, काउंटर साइक्लिकल। अब जब रिसेशन साइकिल आती है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, स्टेट्स हैव टू इंक्रीज इट,
Increase investment where? In the capital in infrastructure. Why? कहीं तो investment आए, कहीं से तो because in some sector if there will be investment, government led investment also, then there can be a crowding in of private investment also. ठीक है, ये काउंटर साइक्लिकल बिहेवियर होता है कैपिटल आउटले का. जब ग्रोथ साइकिल होती है when private investment is already happening, what happens is state does less investments in capital. और जब रिसेशन का पीरियड होता है when private investment is not that much, states start to do higher investment in infrastructure so that there can be crowding in of other private investment around those infrastructure. ठीक है. However, they respond more aggressively during periods of negative output gap. ठीक है, बेसिकली रिसेशन पीरियड ज्यादा अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करती है स्टेट. ओके, बट देयर शुड बी अ लेट्स से फंड. ये पिछली वाली किसी रिपोर्ट में आया था, वो भी ऐसे ही कोई रिपोर्ट थी, मंथली बुलेटिन रिपोर्ट, दैट स्टेट शुड हैव अ corpus for capital expenditure during recession. Now this is nothing. Industrial relation code and labor productivity. तो हमारे 29 सेंट्रल लेबर लॉ को 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया गया. कोड ऑन वेजेस 2019 एंड रेस्ट एवरीथिंग 2020. इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस. तो ये 4 लेबर कोड्स हैं, सब assuming the 29 labor laws. So the code on industrial relation has also introduced fixed term employment using a meta regression analysis. ठीक है, regression analysis means आप पीछे जाते हैं, अपना historical data यूज करके predict करते हैं future matrices यूज करके. ठीक है, this article evaluates the impact of fixed term employment on labor productivity. Fixed term means fixed employment. ठीक है, so इसका labor productivity पे क्या असर पड़ता है वो देखते हैं. So though FT is new in India, it has been on operation in many European countries for several years, increasing firms' flexibility in labor management. FT has a positive and significant effect on labor productivity. So fixed term employment अगर रहता है तो पहली चीज तो firms can be flexible and use their let's say manpower or human resource in different ways it wants. पहली चीज, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास लेबर है, it can manage labor. ठीक है. Second thing, there is a positive effect on labor productivity. Why? Because the morale of labor is high. मोरल हाई होता है. वाई? बिकॉज दे नो कि हमारे पास एक जॉब, स्टेबल जॉब है, वी आर गेटिंग पेड, वी आर अंडर अ लेबर कोड. इफ वी विल बी आस्क्ड टू डू ओवर टाइम, लेट्स से दैट वी विल बी पेड फॉर ओवर टाइम आल्सो. ठीक है, तो इससे क्या होता है, मोरल हाई होता है. मोरल कॉजेस हाई एफिशिएंसी इन लेबर, इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी. दैट्स व्हाट दिस रिपोर्ट इज सेइंग. ओके, दैट्स इट. इसकी एक फिफ्थ रिपोर्ट है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, टू मच मैथ्स इज देयर है, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट जस्ट रीड इट वंस सो दैट यू नो, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए. ठीक है. Now that's it for today. Let's see solve the MCQs now. Okay, अब MCQs करते हैं. Those who will be watching recording, please try it on your own and please try to comment also. Okay, there is a simple feedback mechanism, यही है. Comment कर दिया करो, पता रहता है कि पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो. Even if you don't, no problem. No problem for me. Okay, so question number 1, what was the sequential fall in outward remittances in February under RBI's LRS scheme? So ये February की बात हो रही है. So fall in February. Correct, ईशा, श्रेया, निवेदिता. सही जवाब. Correct, Gaurav. Fall in February 23%. A is correct answer to 2.01. 2.01 or 2.1? Let's see. Okay, आ गया 2. What was the total outward remittances in February under RBI's LRS scheme? Correct, Monica, 23%. Question number 2, what was the total outward remittance in February under RBI's LRS scheme?
Correct. $2.1 billion. Not 2.0, that's $2.1 billion. Isha, Gaurav, Monica, Nivedita, Shreya, everyone is right. D is the correct answer. Now, what is the new procedure issued by SEBI regarding the vault managers? Isha, Monica, Sumit, Nivedita, Shreya, correct? Sahi jawab. A is the right answer. Everyone is right. A is the right answer. Correct, Gaurav. Now, what is SEBI planning to permit for a new category of mutual funds? अब ये plan है, proposed है. देखिए SEBI की plans क्या है? Read it carefully. कहाँ से हुआ? Okay. Too much. Okay. A ही है सही जवाब इसका भी. So yes, Isha, Sumit, Monica, Nivedita, Shab. I think this is the okay. So A is the right answer. Asset managers charges linked to the performance. So what is SEBI's plan regarding mutual fund scheme? New plan. Correct, Gaurav. ईशा, सुमित, सही जवाब. दो सही जवाब है. I will tell you why. B is the correct answer here. Why not A? Nivedita right, Shreya right, Gaurav right. B is correct answer. Not for all, for high performing. Only for high performing. ठीक है, हाई परफॉर्मिंग को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिल सकता है. प्रपोज चेंज. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. Now, last, what led to the contraction in shipments of engineering goods to key markets in financial year 23? Correct, Sumit, Isha, Nivedita, Monica, Gaurav, Shreya. सही जवाब. A is the correct. A is the correct answer. Depressed global demand, especially in the metal sector. Okay, that's it. That's it for today. Thank you for joining everyone. I hope you like the lecture. अगर आज के लेक्चर से आपकी नॉलेज में वैल्यू है तो do like and share. मिलते हैं in the next class, and if you have any queries you can reach out to me on Telegram. Okay. And if some queries is left, please ping me once again so that I can see it. Okay, thank you everyone. Bye bye.